we'll be discussing about high probability trade opportunities. Now, what happens is whenever you are trying to trade in the market, the main big concern, the main big problem when you are looking any time frame, it can be positional, 5 minute, 15 minute, 30 minute, daily time frame, whatever may be the time frame. The one of the biggest problem any trader face is the trade which is called randomness. Without knowing what is the quality of a trade, most traders are end up losing money in a trade which is probably no clear clarity of the market, more or less kind of a random or a trade jump. You are less confidence, forcefully trying to take some opportunity, end up paying too back to the market. How many traders are here who have taken trades which is completely not your trade strategy or setup, but still you have executed trade once, twice, how many ever times? How many traders have done it in the past, in the present, or probably whenever? Just let me know how many traders have done it. Yes, no. Many traders. Yes, good evening, sir. Many traders have done it. Why? The problem is urgency. The problem might be it can be you are urgent to take the trade, or you have an issue of you could have missed an opportunity. Any it can be, to be honest, any reason. Psychologically it can be because of excitement या फिर urgency, market aggressively ऊपर जा रहा है, कुछ तो करना पड़ेगा. Okay, the reason of trying to do something is getting miserably messed up in your trading. Now, for example, let's take an example. Let's begin with a daily time frame example. The chart which is obviously in front of you is this simple and clean stock जहाँ पे probably notice कीजिए I was tracking the stock from here. I have also updated it, posted it on the Twitter, Telegram, YouTube, WhatsApp, everywhere, right? So probably I was focusing on this stock. Now any opportunity, any chart you are seeing in front of your screen, what are all the decisions you will be trying to make? For example, Yampe, this is LNT Finance. This is an opportunity which is ongoing. Today only I have onboarded on this stock. Okay. Obviously, you can see I have placed alerts and everything. Just for now, I'll remove it, okay, so that it will be not a confused stage. Now let's take a live example. LNT Finance, today only I have executed it. Okay, a clear live example. Jampe execution was done live exclusively on today's session only. So now any opportunity you are trying to track, any opportunity you are trying to trade, what are all the things first you will be tracking? That is the key most important factor whenever you are trying to execute something during the live market. Okay, now Yampe, first and foremost, what is the current market condition? First, we need to be aware of the what is the current ongoing trend of the market. That is the most crucial factor, and obviously, that is the most crucial thing most traders are ignoring, not clearly aware ki what to check, where to check, when to check. These issue is the first problem. So now, what is the LNT Finance? First of all, be clear on the location. Where is the price trading is always important. Okay, where is the price is trying to trade, that is the most important factor, but that is the first thing which you traders are ignoring. यहाँ पे LNT Finance, it is trading at all time high. Okay, fine. Where the market Nifty, Bank Nifty trying to trade at current level, obviously trading near all time high. So now tell me, it's very important, Nifty is Bank Nifty is trading all time high, but in this case, the major problem, if we are seeing Nifty mid cap, just a minute, Nifty mid cap Nifty, if we are just trying to check,
where it is trying to trade. Now again, if you just notice, mid cap 50 is almost trading around all time high, right? 52-week high probably. So now can anyone tell me whether mid cap, all or maximum mid cap stocks, या फिर for let's say 20 to 30 percentage of even mid cap stock is trading near all time high? Yes or no? Can anyone tell me, those who are tracking any stocks of mid cap, small cap? Very few stocks are trading near and around all time high, but the index nifty chahiye, bank nifty ho gaya, everything is trading near all time high, index aram se trading near all time high. But the problem, stocks, are they trading near and around all time high? First and foremost question. If it is not happening, straight away it's a no for me. For example, Yampe. Okay. I have set of scanners. Jampe set of scanners ready. Jampe, it is showing bulls breakout, bulls momentum, indicator type 1, type 2, IPO base, stock range, everything. Okay. So now let's say I'll be importing an indicator type 2. Okay, I'll be importing indicator type 2 scanner in my watch list. So I've imported. Now I can just go to the trading view platform and I can just reload this. Okay, so all the 45 stocks here I have in front of this screen. You can see this. I have these 45 stocks here, 45 stocks, which is as per my scanner, which is available in front of me. So now it's become very easy for me. This 45 stocks, yes, I am using trading view free version only. It's not like any paid version is required. Now the question is, what is the app? This is inbuilt, created, developed, designed, everything by myself. Okay, probably I'll be giving access to you traders also, probably by this weekend or by the next week. So stay connected with me on WhatsApp, Telegram or Twitter to get access of it. Okay. So यहाँ पे मेरे लिए तो 45 stocks available. First and foremost, I have told, I have taken only one scanner, indicator type 2. यहाँ पे I could see 45 stocks, 45 opportunities are possible in any of the stocks. I might get opportunity. So now important A key, if I want to view the stock, you can see there are 45 stocks. Every time I cannot go and type CUB bank and go and open the chart, track what is happening. Waste of time. यहाँ पे there are scanners जहाँ पे I have 400 stocks. 407 stock is ready for tomorrow's session. That is 20. This is today's scanner coming in for tomorrow's session. 407 stocks ready. So I can just go import. I can make it type any name. Okay, bulls momentum. Okay, and I can just import it. It is get imported on my watch list. Straight away I'll be getting access to it here. You can see bulls momentum. I'm just loading the 407 stocks. यहाँ पे आ गया. Here it is, 407 stocks loaded. Now manually one by one I can go view this. I can, whether I can manually type AB Capital, ABDL, ACC, etc., Adani Port, etc., etc., one by one. If I go and type, it will take more than multiple hours to scan. So now what I'm doing, simple, I will just press the next option here. यहाँ पे I'm getting access. Just say I'm just pressing next, in just fraction of second the stock will load. The chart will straight away load for me. It will do my work. 5 paisa chart is in front of me. Okay. Same any stock I want to just in my watch list, I'm loading it. That's it. It's as simple. AB Capital trading at all time high. ABDL now. These are stocks which comes in the scanner, right? You might have your own scanner, you can upload it and you can do the things. Now for example, coming back to the location part, I have told you, right, daily time frame 30-minute, hourly 5-minute, every time frame I'll be discussing. But यहाँ पे notice कीजिए, what is it? It is a clean daily time frame chart where the index is trading near and around all time high. Now if I want to trade only on equity, I need to look for the stocks which is in radar of the bulls.
Am I correct? So that is, my scanner is doing the work for me. Now the tool is helping me to just push this next stocks jump in. So now what I'll be first checking. Now from the first I'll go. Okay, Yampe, this is the stock number one out of the 407 stock. So now what are all the things I can do? I can use multiple tools. Okay, for example, I can use a moving average. Okay, I can use any moving average to get the information of where the price, what is the momentum. Let's say I'm using a double moving average. Now what I am doing here, I am not interested to trade according to the moving average. I am not interested on it. I am purely interested to find what is the current ongoing trend. Simple rule hai. First, price has to do trade above it. First rule number one. Why above moving average? Above, this is 10 and 21 ka moving average. Price has to trade above moving average. First basic rule. Why? Price trading below moving average means that stock ka trend is not so strongly bullish. Rule number one clear hai? How many of you agree? Price trading below moving average means it is not in a bull's trend. How many of you agree? Yes or no? Stock trading below moving average means it is not in a bull's trend. How many of you agree? Yes, no, right? So first filter. बढ़िया. Next, I want to execute. तो ये हो गया bullish stock हो गया. Now simple, there are multiple perspective जहाँ पे I can check. So now if I want to check is price is in a tight range. Okay, trying to get for a next set of breakout. So this is fine. These are the things which is first important. For example, next I'll go one more stock. यहाँ पे notice कीजिए. Price is in between the moving average. Straight away avoid. Okay, if I want to use any other tool, जहाँ पे मान के चलिए I want to use, let's say, pivot points. Okay, if price is trading near and around pivot points or not, I'll be probably removing everything. Any tool you can use. I'm not telling you peculiarly you have to. Indicators, if you are using daily time frame, I'll tell you one thing which is might be weird. If you are using daily time frame chart for execution, definitely use indicators. One or two, कोई problem नहीं. Not multiple mixing all indicators. नहीं. Using one or two indicators, कोई problem नहीं. अब now tell me, price is trading in between this moving average. Whether it is so strong for me, if you ask, no. Next. First यहाँ पे I am only finding what which stock is in along with the bulls. Now notice कीजिए ये clearly in a downtrend, but the stock is trading above moving average, but the big trend is still down, right? Price after continuous pivot is shifting down first time in last 4 or 5 months from the month of July. It is almost now only the first time price trying to trade above pivot point. In the current market condition, good Nifty moving up, Bank Nifty moving up, mid cap moving up, small cap moving up. The stock which we are selecting or you are selecting is not moving. Stock specific move. So this is already in a bearish move. So should I need to select 9? Next. Now look at this. अब ये notice कीजिए ये BB. One by one I'll be explaining you. Now notice कीजिए aggressively bearish momentum. Next, price trading below pivot. It is above moving average. Price trading below pivot. Price is already in a downtrend. So now tell me, is it worth 9? So now tell me, ABB Indian Limited, should I need to give importance to track? Yes or no? Should I need to give priority to track? Yes or no? Make sure everyone try to answer it in the chat box. More the answer, better you are learning. No. Right? Move on. Next. Aditya Birla Capital. Stock is trading around where? All time high. Stock is trading around all time high. Notice कीजिए यहाँ पे pure sideways, downside breakout failure. So now if I want to capitalize it, I should have capitalized it here, not chasing here. मुझे कैपिटलाइज करना ही ये था. प्राइस यहाँ पे ऑलरेडी क्लीन बुलिश ट्रेंड, pivot is also shifting up, moving price is trading above moving average, price is in a sideways downside breakout failure. If I want, I should capitalize here, I should capitalize here.
If I have not done it, I am not going to chase. Okay, so this is the most good momentum stock. अब notice कीजिए, you want to put your money for positional trading, for swing trading, whether you will be looking stocks which is like this, or kind of Aditya Birla Capital kind of a stock, or a stock like ABB International Indian Limited, which you will be focusing? AB Capital kind of stock or ABB Limited kind of stock? Obviously, location trend क्या है, bearish है. Focus will be in kind of a AB Capital kind of stock, not on the ABB Limited जहाँ पे कुछ खास momentum नहीं मिल रहा है. So these are the first step you need to give. Focus on the high probability location जहाँ से price can move up easily. Right now notice कीजिए ABDL, this was a stock which I am personally, I have posted on Twitter also. यहाँ पे notice कीजिए, already stock is trading near where, near 52 week high, all time high location पे trade कर रहा है. Now notice कीजिए what is the price behavior going on. आराम से every month pivot is shifting up, no doubt. Bulls trend are very clear. Price is trading near and above the moving average, आराम से trade कर रहा है, no problem, no issue, nothing is happening in terms of bearishness. Price is in a consolidation stage, चलो बढ़िया. Now tell me, I am happy to go along with the breakout. If market is ready to make a breakout, I am happy to go. I am very much ready to participate. Why? Question number one, why? ट्रेंड क्या है? बुलिश. प्राइस ट्रेडिंग अबव द मूविंग एवरेज, आराम से ट्रेड कर रहा है. प्राइस ट्रेडिंग अबव द पिवोट, आराम से इट इज ट्राइंग टू ट्रेड. वेयर इज द प्राइस लोकेशन? प्राइस ट्रेडिंग नियर एंड अराउंड द all time high. Where is the current nifty bank nifty trading? Near and around all time high. So these kind of stocks are the one which can give momentum on the bullish side if the market stays bullish. That is the rule, that is the way the market behave. Now ACC, now notice कीजिए whether it is worth to even track ACC. Whether is it worth, yes or no? Whether is it worth to track a stock like ACC in this current market condition? 100% no. No point in doing time pass. Move on. Now notice कीजिए, this is the stock Aquitas Chemical. Now what is the location? देखना पड़ेगा. All time high आराम से है, कोई दिक्कत नहीं, no problem. Now should I need to get impressed by these big volume, big green color candle? No, no time pass. I am not interested in getting hyped, going and chasing after this green color candle. I am more focused on a breakout trading or pullback rejection trading या फिर failure reversal trading. राइट, या तो स्ट्रेट अवे ब्रेकआउट कर लीजिए, पुल बैक रिजेक्शन करिए, या फिर फेलियर, फॉल्स ब्रेकआउट, रिवर्सल. दिस थ्री आर बेस्ट. अब मैं जाके ये बड़े रेंज कैंडल है आया और गो एंड चेस अबव दिस कैंडल आई फॉर अ ट्रेड एंट्री, स्टॉप लॉस बिलो दिस. कैन यू just look at how much point stop loss? Almost 200 plus point stop loss. Now tell me, is it trend to bullish है? चलो बढ़िया, trend is bullish. Okay, fine and fair. Price trading above moving average? Yes. Price trading above pivot? Yes. If you plot any indicator, super trend, whatever trend following indicator, it will show bullish only. Now tell me one thing. Are you ready to take a 200 plus point stop loss in this stock? Yes or no? Now purely you have to be interactive. Are you ready to take 200 plus points का stop loss? 100% नो. तो ये स्टॉक बुलिश भी है. बुलिश मतलब द स्टॉक इज बुलिश, इट डजंट मीन ना एवरी स्टॉक इज ट्रेडेबल, चांस ही नहीं है. यूज इतना बड़ा स्टॉप लॉस नॉट वर्थ, तो अवॉइड, मूव ऑन. यहाँ पे ट्रेडिंग बिलो मूविंग एवरेज, जस्ट मूव आउट. नेक्स्ट, अदानी पोर्ट. वेयर इज द लोकेशन? देखना पड़ेगा लोकेशन कहाँ पे है. लुक एट दिस. यहाँ से अग्रेसिव फॉल हो रहा है मार्केट, उसी लोकेशन में प्राइस इज ट्राइंग टू ट्रेड. Now these aggressive player can again participate, chances are there they can participate.
So one thing is there, still not clear participation they can do. Now after 4 5 days of down move, this sudden green candle coming in with volume. Now rather than I will be whether I will be going jumping and pumping and taking a buy trade above this, नहीं करूँगा. Why? Previously there are aggressive bears rejection location. यहाँ पे after 4 5 days of down move, one day का up move is just a pure retail traders attraction. रिटेल ट्रेडर्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं. मोस्ट ट्रेडर्स व्हाट दे डू ना, वंस दे प्लॉट मूविंग एवरेज, प्राइस इज ट्रेडिंग अबव मूविंग एवरेज, बाई. चांस ही नहीं है. यू कैन नॉट मेक कंसिस्टेंट प्रॉफिट. प्रॉब्लम, लोकेशन देखना शुरू करिए. फोकस ऑन द लोकेशन. इट कैन बी एनी टाइम फ्रेम, इंट्राडे, पोजिशनल और स्विंग. फर्स्ट लुक एट लोकेशन. लोकेशन क्लियर नहीं है तो कुछ भी क्लियर नहीं होगा. क्लियर इनफ. नेक्स्ट, अदानी पावर मूविंग एवरेज के बिलो है, पिवोट इज ट्रेडिंग बिलो, नो यूज. Look at same scenario below. I am just seeing the screen, just it's a fraction of second. यहाँ पे मेरे पास 400 stocks in my watch list as per the scanner. Every stock I cannot waste my time in typing Aeroflex, Bajaj Finance, Adani Port, Adani, नहीं, chance ही नहीं है. जितना time waste नहीं कर सकते. Next, I'm pressing next. I'm going eighth. ऑलरेडी नाउ लुक एट दिस. इतना बड़ा मोमेंटम हो चुका है. इसके बाद जाके चेस करेंगे कोई यूज नहीं, बिकॉज प्राइस इज स्टिल वेरी फार अवे फ्रॉम दीज मूविंग एवरेजेस. प्राइस स्ट्रेट लाइन पे मूव नहीं करता. प्राइस मूविंग अप, इट विल टेक सम टाइम, उसके बाद मोमेंटम कंटिन्यू होता है. नेक्स्ट, नोटिस कीजिए, बिलो पिवोट, बिलो मूविंग एवरेज, कोई काम का नहीं. नाउ दिस अगी इंफ्रा बाय द नेम, यहाँ पे नोटिस कीजिए, ये फैंसी कैंडल दिख रहा है. ये फैंसी कैंडल जैसे ही दिख रहा है स्टॉक्स में, आई एम अवॉइडिंग इट. मैं कोई प्राइस एक्शन ही नहीं देख रहा हूँ. आई एम कंप्लीटली अवॉइडिंग इट. व्हेन आई विल बी रीफोकसिंग, नोटिस कीजिए यहाँ पे क्या है, प्राइस टेकिंग रेसिस्टेंस, द सेम रेसिस्टेंस कन्वर्टिंग इनटू सपोर्ट, देन आई एम रेडी टू ज्वाइन. व्हाई? मुझे स्टॉप लॉस, आई एम नॉट रेडी टू टेक बिगर स्टॉप लॉस. यहाँ पे प्राइस वी हैव प्रीवियस रेसिस्टेंस, इफ दिस कन्वर्टिंग इनटू सपोर्ट विद अ बुलिश कैंडल फॉर्मेशन, तो मेरे लिए क्या हो गया, दिस इज माय स्टॉप लॉस. यहाँ पे आई एम कंफर्टेबल टू टेक एंट्री फ्यू पॉइंट्स अबव दिस. यहाँ पे आई एम रेडी टू गेट, देयर इज गुड चांस कि 1:2, 1:3 और अबव रिस्क रिवॉर्ड कैन बी अचीवेबल, बिकॉज मेरा स्टॉप लॉस भी छोटा है. एंड नेक्स्ट, पुल बैक रिजेक्शन कमिंग इन, सो सपोर्ट ले रहा है प्राइस, so bulls are again trying to participate. I am just joining them. Resistance turning into support. One more confirmation. लोकेशन चेक कर लिया. क्लू भी इंपॉर्टेंट है, बिना क्लू क्या ही ट्रेड करोगे. राइट? बिग कैंडल इज फैंसी अट्रैक्शन. बिग कैंडल इज अ प्योर फैंसी अट्रैक्शन. इफ यू वांट टू टेक एनी रीसेंट एग्जांपल, आपको चाहिए M&M, बेस्ट. M&M is there. What I can tell, Federal Bank 2 days back profit book किया था. यहाँ पे from year I am participating from year on M&M Finance. Exited probably somewhere year. मैंने exit कर लिया, उसके बाद प्राइस एक दो दिन ऊपर भी गया, नीचे भी आया, no problem. For me, more than 1:2 risk reward achieved, I am happy, because last week यहाँ पे या फिर दिस लास्ट वीक मार्केट कंडीशन, वेदर इट वाज मोर स्टेबल, नहीं. लास्ट वीक मार्केट कंडीशन वाज नॉट स्टेबल. प्रॉब्ली व्हेन फ्राइडे, थर्सडे फ्राइडे, जस्ट लुक एट थर्सडे फ्राइडे निफ्टी. व्हाट इज हैपनिंग ऑन थर्सडे फ्राइडे? यहाँ पे प्राइस स्टार्टेड कमिंग डाउन, प्राइस नीचे आ रहा है. ऑल टाइम हाई लोकेशन में प्राइस अगेन ट्राइंग टू कम डाउन, गिविंग टू द बियर्स. इंट्राडे में it was not daily closing, market was not steady for the bulls, so I am happy with 1:2. I have also updated the things, right? चीजें अब मैं क्या देख रहा हूँ यहाँ पे, आप नोटिस कीजिए. लाइव ट्रेड को ही एग्जांपल ले लेते हैं. व्हाट आई हैव डन, जस्ट नोटिस क्लोजली हियर. प्राइस above the pivot, pivot is rising up, price above moving average, sideways breakout failure. ये ब्रेकआउट फेलियर रैंडमली भी नहीं हो रहा है. वन मोर थिंग नोट डाउन हियर, ये जो पे यहाँ पे प्राइस साइडवेज था, गैप अप हुआ, उसी गैप अप से सपोर्ट लेके प्राइस रिजेक्ट कर रहा है. राइट? यहाँ पे मल्टीपल मंथ का रेसिस्टेंस के ऊपर प्राइस स्टेबल, गैप अप हो गया, उसके बाद प्राइस उसी लोकेशन से इट इज टेकिंग सपोर्ट एंड रिजेक्शन.
राइट, मल्टीपल क्लूज आर हियर फॉर द प्राइस रिजेक्शन, डिस्पाइट यहाँ पे अग्रेसिव फॉल है, वी हैव लाइव क्लू हियर कि प्राइस रिजेक्ट कर रहा है, साइडवेज ब्रेकआउट फेलियर हो रहा है, previous hurdle which was acting as hurdles over here, it is acting as support. Now tell me whether it is my decision to go and join to take trade on M&M Finance, whether it is worth, yes or no, whether it was worth, yes or no. Now the price has moved, I have booked profit, sab theek hai, but the fact here is what goes before the trade, how clear is your plan, how clear is your clue, this is called as high probability opportunity. फालतू में ट्रेड तो हर एक ट्रेडर्स ले रहे हैं, मैंने भी लिया, आपने भी लिया, बट द रियलिटी इज गुड क्वालिटी ट्रेड, जहां पे छोड़ने लॉसेस, चांसेस ऑफ लॉसेस इज रेस. नाउ आप नोटिस कीजिए, केस स्टडी ले रहा हूं रीसेंट का भी, फेडरल बैंक, नोटिस कीजिए, कर लीजिए, वेयर फेडरल बैंक इज ट्रेडिंग, where all time high, right? Price almost full month नवंबर का more than 15-20 days sideways ही चल रहा है, प्राइस ने sideways चल रहा है, चलो बढ़िया, कोई प्रॉब्लम नहीं, प्राइस ने ब्रेकआउट दिया, आई एम हैप्पी, जॉइंट हियर. उसके बाद 1-2-3 days ऑफ कंसोलिडेशन, आई वॉज होल्डिंग क्लियरली, आई वॉज वेरी क्लियर. नाउ टेल मी, इन दिस फेज जहाँ पे 3 days का साइडवेज, दो बेसिक चार्ट का नॉलेज यू ऑल्सो हैव, नाउ टेल मी इन दिस लोकेशन इज देयर एनी क्लू ऑफ बियरिशनेस, सिंपल बताइए, यस और नो, इज देयर एनी क्लू ऑफ बियरिशनेस. दीज क्वेश्चन यू हैव टू आस्क योरसेल्फ, इसी को बोलते हैं हाई प्रोबेबिलिटी, जहां पे ट्रेड लेने के बाद आपका कितना क्लैरिटी है. इज देयर एनी क्लू ऑफ बियरिशनेस, नथिंग इज देयर. तो अब मुझे बताइए, इस स्टॉक को यहाँ पे एग्जिट करना वर्थ है? नहीं, मैंने एग्जिट किया 255 के आसपास yesterday, मोर देन 1:2 मिल चुका है. व्हाट, व्हाई yesterday एग्जिट सर, 1:2 मिल चुका है, व्हाई कांट वी राइड इट? yesterday मार्केट आप नोटिस किए 2-3 दिन से प्राइस इज फॉलिंग डाउन, टुडे इट वाज ग्रीन, किसी को पता नहीं था आज इतना बड़ा ग्रीन कैंडल बनेगा. 3 days से कंसिस्टेंट फॉल इन द निफ्टी, कंसिस्टेंट फॉल इन ब्रॉडर मार्केट, सब कुछ गिर रहा है, थ्रू आउट मार्केट इज फॉलिंग डाउन for the past 2-3 days. In that particular scenario, Federal Bank is shining, moving clearly 1:2 दे रहा है, आराम से ले लीजिए, मार्केट कंडीशन कल तक सही नहीं था. Now today it's very easy to tell after seeing Nifty bullish candle, sir we should have hold it, you were in urgent to exit. नहीं, current condition क्या था, what was yesterday's condition? Consistent downside momentum in broader market, index, bank nifty, mid cap, small cap, everywhere. उसमें ये मेरे लिए स्टॉक 1:2 रिस्क रिवॉर्ड आराम से दे रहा है, so there is nothing wrong for me to book profit. Price going further up, I'm not bothered. Yesterday market, till yesterday it was not a good condition, I am holding it from here, probably 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 trading sessions I am holding, right? So 7 trading session holding, market were going up, going down, but consistent nifty coming down, consistent broader market coming down, risk लेने से कोई फायदा नहीं. Clear enough? So this is what high probability entry लेना एक साइड है, high probability holding on it. high probability कैसे hold करोगे? See the chart, आपको सामने क्या दिख रहा है यहाँ पे? Is there anything bearishness? Nothing special. Then what is the need of urgency? राइट. नेक्स्ट अब बात करते हैं 30 minute टाइम फ्रेम. लेट्स टेक सम अदर एग्जांपल, 30 minute टाइम फ्रेम, राइट. वन टाइम फ्रेम आई विल बी कमिंग इन, निफ्टी हो गया, बैंक निफ्टी हो गया, स्टॉक्स वी आर टॉकिंग ऑन डेली टाइम फ्रेम. नाउ मूविंग ऑन टू द व्हाट, मूविंग ऑन टू द निफ्टी, टाइम फ्रेम चेंज करते हैं, आई एम जस्ट नाउ गोइंग टू द 30 minute टाइम फ्रेम. So in this 30 minute time frame, what is the good scenario? What are all the main core focus which is important टू अंडरस्टैंड इन 30 मिनट का टाइम फ्रेम? यहाँ पे मैंने कोई इंडिकेटर प्लॉट नहीं किया, प्लेन ब्लैंक चार्ट है, राइट. कुछ स्पेशल सिनेरियो मैंने यूज नहीं कर रहा हूँ, इंडिकेटर एक भी प्लॉट नहीं किया, राइट. नाउ यहाँ पे वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड डील, आई विल बी यूजिंग पिवोट. ओके, डेफिनेटली आई विल बी यूजिंग पिवोट. पिवोट प्लॉट हो रहा है, बढ़िया. Price going up, coming down, going up, coming down, going up, coming down.
अब नोटिस कीजिए प्राइस एवरी वीक फॉर द पास्ट 2 3 वीक पिवोट इज राइजिंग अप। यहाँ पे राइजिंग अप, एक दिन नीचे आया, प्राइस काइम डाउन, उसके बाद प्राइस, नोटिस कीजिए पिवोट शिफ्टिंग डाउन, बट प्राइस इज नॉट ट्रेडिंग बिलो। अब पिवोट इज शिफ्टिंग डाउन, चलो बढ़िया। प्राइस भी तो नीचे ट्रेड करना है, 1 2 कैंडल्स एंड देन प्राइस रिवर्सिंग बैक टेकिंग सपोर्ट, नेक्स्ट डे बुल्स मोमेंटम एंड देन बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू। अब यहाँ पे प्राइस स्टार्ट्स ट्रेडिंग बिलो द पिवोट, इंपॉर्टेंट है सस्टेन करना। एक दो कैंडल ट्रेड करने से ट्रेंड विल नॉट कंटिन्यू, इट हैज टू सस्टेन। वेदर इट इज सस्टेनिंग, नो इट इज नॉट सस्टेनिंग, इन जस्ट फ्यू कैंडल्स रिवर्सिंग बैक अप। यहाँ पे नोटिस कीजिए प्राइस आराम से पिवोट से सपोर्ट ले रहा है, मूविंग अप, नेक्स्ट कैंडल कंटिन्यू, राइट। नाउ अब हाउ टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज, इंपॉर्टेंट है। आप चार्ट देख रहे हो, सब कुछ देख रहे हो, चलो बढ़िया, सुपर कूल, लुक्स फैंसी, कैंडलस्टिक चार्ट, सब कुछ बढ़िया। हाउ टू फाइंड अपॉर्चुनिटी, how to find the core opportunity which is there in the market, how are the market is giving opportunity in terms of the reward to us, simple। अभी एक लाइव केस स्टडी लेते हैं, राइट। दिस इज एन रीसेंट निफ्टी का एग्जांपल, जहाँ पे एग्जीक्यूटेड प्रॉफिट बुक्ड ऑन द नेक्स्ट डे गैप अप, राइट। नाउ द क्वेश्चन, यहाँ पे नोटिस कीजिए एग्जीक्यूशन ऑन दीज कैंडल्स, अबाउट दिस was the execution, okay, stop loss was somewhere here, next day market open 1:2 risk reward achieved। now what went back of the mind, यहाँ पे नोटिस कीजिए प्राइस ट्राइंग टू मूव अप, चलो बढ़िया, राइट। नेक्स्ट, this is the location, price trying to take support, reverse back up, price trying to take resistance, reverse back up, same location, this time what is happening on the same location, price नीचे आ रहा है, coming back, price again taking support। तो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, दिस वाज ट्राइंग टू एक्ट एज सपोर्ट, बुल्स वेर नॉट स्ट्रांग, प्राइस ट्राइंग टू एक्ट एज रेसिस्टेंस, बियर्स वेर नॉट स्ट्रांग, प्राइस अगेन ट्राइंग टू गो अप, सेम डे कैंडल क्लोजिंग, कमिंग बैक क्लोजिंग, नेक्स्ट प्राइस टेकिंग सपोर्ट, चलो बढ़िया, प्राइस सपोर्ट ले रहे हैं, प्राइस इज टेकिंग सपोर्ट हियर, सेम लोकेशन, लेट मी मार्क द लेवल, probably this is a marked, probably it will be better if I'm marking it like a zone, okay। अब नोटिस कीजिए यहाँ से प्राइस सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है, फॉलो थ्रू नहीं है, प्राइस ट्राइंग टू गो डाउन, नो फॉलो थ्रू, सो वेयर इज द प्राइस ट्रेडिंग, bulls are not ready to go up, bears are not ready to come down, confused market, both are not in control। so when price simple goes sideways, bulls are not ready to go up, bears are not ready to go down, राइट। प्राइस गोइंग अप कमिंग डाउन, गोइंग अप कमिंग डाउन, बट ये रेसिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है, कंटिन्यूटी नहीं है, प्राइस ट्राइंग टू टेक अ सपोर्ट, नो कंटिन्यूएशन गोइंग ऑन, रेंज बाउंड एक्शन कंटिन्यू, यहाँ पे भी सपोर्ट ले रहा है, ऑन द डे क्लोज कमिंग बैक डाउन। नाउ नोटिस कीजिए प्राइस अगेन टेकिंग सपोर्ट, फर्स्ट कैंडल बिग फॉर्मेशन रिजेक्ट कर रहा है, सेकेंड कैंडल सपोर्ट ले रहा है, एंड देन व्हेन द बियर्स ट्राई टू केम इन अगेन, नोटिस कीजिए प्राइस ट्राइंग टू टेक अ सपोर्ट, गोइंग अप, पुल बैक अगेन रिजेक्ट, यहाँ पे bears came, crossed and tried to trade below this zone, again they came, bulls again bears, whence again bears are trying to come, ये नहीं कर रहे, सपोर्ट लेके प्राइस रिजेक्ट कर रहा है, पुल बैक रिजेक्शन। तो नाउ टेल मी, in a range bound market, whether this is a good opportunity to go and take a bullish trade, I have done it, which I have updated also, but now tell me whether this is worth to take a bullish trade in this kind of location, yes or no। kind one trader is telling yes, yes, kind of risky, chalo बढ़िया, it's up to you, but the fact here is if we just try to see here, bears not doing anything,
यहाँ पे प्राइस फिर से सपोर्ट लेके रिजेक्ट कर रहा है, राइट? सपोर्ट लेके प्राइस कुड हैव ऑलरेडी इजीली केम बैक डाउन, नहीं, इट इज नॉट डूइंग दैट. प्राइस टेकिंग सपोर्ट, पुल बैक, फिर से रिजेक्ट कर, राइट? दिस इज व्हाट कॉल्ड एज आई प्रॉबिलिटी. इसके पीछे क्या क्लू है? सेम support, resistance, support, price again trying to support, right? So now the fact bears are not coming in. Just notice the strength of bears. First time they were moving down, they were easily trying to trade below the zone. Next time they are not doing. Now again from the open itself they are not doing. From the open, price is trying to reject from the first 30 minutes. So can you see the depth? One, two, three. Can you see the seller's power is getting decreased? एवरी टाइम यहाँ से सपोर्ट भी लिया, रेसिस्टेंस भी लिया, प्राइस टुक सपोर्ट, प्राइस टुक सपोर्ट हियर आल्सो. Just see only the seller's strength, whether it is getting decreased around the same support resistance game. यहाँ से support, फिर से resistance, फिर से support, same location है, but the seller's power is getting decreased. This is 1, 2, 3. Compared to 1, 2 is smaller. Compared to 2, 3 is more smaller. Who is getting weaker? Sellers, bears, or bulls? Who is getting weaker? Can anyone tell me who is getting weaker? Bears are getting weaker. Obviously, bears are getting weaker. Sellers are getting weaker. In the market, there are only two players, bears and bulls. Bears are getting weaker. It is showing the price is taking support, price is pullback, price rejection, showing an hint of bulls. Now tell me, is this an high probability opportunity? 100% yes. यहाँ पे there is 0% prediction. Here it's clearly stage by stage. The clue was gathered. Based on the clue gathered, that makes me confidently execute the trade. That makes me confidently execute a bullish trade. Now the question, sir, यहाँ पे here pivot से भी price reject कर रहा है. Why you have not taken a bearish trade? Now यहाँ से support ले रहा है, चलो बढ़िया. Now straight question you might traders have, यहाँ से pivot से reject कर रहा है. Why not a bearish trade below this, stop loss below this? Risk to reward. Risk to reward. What risk to reward? This is the reference level जहाँ से bulls rejected, momentum became fast. So this level is an important bulls rejection level. So from my entry till 1:1 there should be no disturbance. यहाँ पर मैं यहाँ पे एंट्री कर रहा हूँ. Here I have the reference level. कितना रिस्क टू रिवॉर्ड है? हाउ मच इज द रिस्क टू रिवॉर्ड इफ आई एम एग्जीक्यूटिंग? आई हैव नॉट डन इट. रिस्क टू रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है. जस्ट नोटिस हियर. हाउ मच इज माय रिस्क टू रिवॉर्ड? यहाँ पे 1:0.5. नॉट इवन 1:1. नो यूज, नॉट इवन वर्थ. अब रिस्क टू रिवॉर्ड भी देखना पड़ता है. रैंडमली हो गया ट्रेड, जंप एंड पंप एंड टेक अ ट्रेड मींस market is not gonna reward you. Let me be very frank. Okay, now one more question, sir. What if we would have missed the opportunity here? यहाँ पे what if we have missed the opportunity here? No problem. If you have missed the opportunity there, यहाँ पे same, यहाँ से BS rejected, same location, price is taking support. If this was missed here, यहाँ पे तो clear है ना. Now those traders, yes sir, price is in range bound market. यहाँ पे range bound, if price continues to sideways means what will happen? Always remember, a sideways market changing to either bulls or bearish market in two ways. One, straight away breakout. Two, this one. Not straight away breakout. Previous resistance converts to support. That is the second type 2. जहाँ पे the market from sideways it is ready to move up. If the same sideways market
Previous support is converting into resistance, means the sideways market is ready to push the price towards downside. It's a end of, probably end of sideways market, beginning of directional market. सिमिलर ईयर यहाँ पे आपने एग्जीक्यूट नहीं मिला, आपने नहीं किया, आपने देखा नहीं, यू आर नॉट दैट मच क्लियरली ट्रैकिंग द चार्ट. अब ये तो वेरी सिंपल है ना, प्रीवियस रेसिस्टेंस टर्निंग इनटू सपोर्ट, पुल बैक रिजेक्ट कर रहा है, क्लियर बुलिश कैंडल, आराम से एग्जीक्यूशन, व्हाट्स रॉन्ग इन इट, राइट? अपॉर्चुनिटी मार्केट इज रेडी टू गिव, बट यू आर मिसिंग द क्लू, आप क्लू नहीं देख रहे हो. करंट मार्केट कंडीशन रेंज बाउंड, यू ओनली हैव टोल्ड चलो बढ़िया प्राइस यहाँ से सपोर्ट ले रहा है, एंड हियर व्हाट इज द लेफ्ट ओवर. So my main problem is most traders are not aware कि when the market is sideways, when it will start making momentum, या तो straight away breakout हो गया, number one. Number two, price is sideways, not breakout, the previous resistance converting into support and then momentum. Upside के लिए बोल रहा हूँ, I'm telling only on the upside, just vice versa for downside. One more scenario, price is sideways, right? Price going down, breakout, failure. This is scenario number 3. Scenario number 4, price is sideways, उसके बाद price will do stable action above this, या फिर इसी top से price will take support and reject. So this is number 4. These are the 4 prime high probability opportunity जहाँ पे your stop loss is also smaller. Small stop loss capturing big target is easy. Now this is all called as high probability opportunity. इसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा. नहीं सर, हम तो ग्रीन 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 कैंडल यहाँ पे देख लिया, रेड 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 कैंडल देख लिया, जंप एंड पंप एंड टेक अ बाई ट्रेड. This is what most traders are doing. You are also, there are traders in this session, they are also doing the same. क्यों कर रहे हो? बिकॉज आपके पास प्रॉपर क्लू नहीं देख रहे हो. यू आर नॉट लुकिंग द मार्केट इन अ पर्सपेक्टिव ऑफ अ प्रॉपर प्लान के हिसाब से एग्जीक्यूशन. यू ट्रेडर्स आर नॉट डूइंग दैट. दैट इज द मेन कोर प्रॉब्लम. नाउ कैन यू अंडरस्टैंड, एक मार्केट साइडवेज रेंज पे ट्रेड कर रहा है, व्हाट आर ऑल द वे इन विच the market can give a momentum to give the hint of direction plus opportunity with smaller stop loss. Now can you understand? Yes, no? Yes, no in the chat box quickly. इसी को बोलते हैं हाई प्रोबेबिलिटी अपॉर्चुनिटी. मार्केट अपॉर्चुनिटी इट विल गिव, बट आप, I repeat again, you have to capitalize. In short, I will tell you, in a 1 month, I'll tell you from my experience, in a month, taking 5 to 10 high probability trades is way far better than in a month taking 40 trades, 30 trades, 50 trades, 100 trades, 200 trades. कोई यूज नहीं. 5 to 10 high probability trades in a month is way better than the way most traders are taking monthly 30, 40, 50 trades, 100 trades, 200 trades. कोई काम का नहीं है. By the end month net P&L going into minus. क्यों? Because आप हर कोई ट्रेड ले रहे हो. ग्रीन ग्रीन कैंडल देख लिया, बाई बाई बाई, रेड रेड कैंडल देख लिया, सेल सेल सेल. पहले कंडीशन को चेक कीजिए. मार्केट जब रेंज बाउंड होता है, देयर इज अ डिफरेंट कंडीशन. व्हेन द मार्केट इज ट्रेंडिंग, देयर इज अ डिफरेंट कंडीशन. यू हैव टू ट्रैक द मार्केट. Every time I'll be doing the same way in tracking the market means biggest blunder problem which most traders are trying to do. So never ever do that. Okay, never ever do that mistake, because the chances of losses are more. Now whatever I will be telling to you, now you can compare it with yourself, what you have been doing it in the past. Lot of random trades. आपने last time, can you tell me last time when you have taken a clear clue भी था, clarity was there, risk reward was there, it was as per your trade strategy, you have taken a trade. Last time when you have done it?
Do you ever remember? Yes, no? ये क्वेश्चन आपको पूछना पड़ेगा. जस्ट प्रैक्टिकली 4-5 सिस्टम में स्क्रीनशॉट डाल के शो ऑफ करना, नो यूज. इट इज नो यूज फॉर योर ट्रेडिंग नॉलेज. The question which I am asking, do you have an answer for that question? That is where your trading will improve. There is difference between what and why, right? I could see not even a single trader have answered. When was the last time you have taken an high probability opportunity? जहाँ पे clue was also in favor of the current market, clue was in favor, current market conditions was in favor, risk to reward was also in favor, and it was as per your trade setup. This was the question I have asked. Not even a single trader has given an answer. Can you understand now? What are you doing? Not even a single trader answered, I repeat, in this session for this question. Last time when you have traded a trade, जहाँ पे clue was along with the current market direction, market condition you have checked, risk to reward you have checked, right? Setup, it was as per your trade strategy. Can you understand which stage of trading you are? I'm not making आपको नीचा नहीं दिखा रहा हूँ. I'm not pointing or making you down. I am telling you the reality. जो रियलिटी है वहीं से आपको प्रॉफिट बनेगा. टाइम पास बातें करना मुझे भी आता है. आई कैन स्पीक फॉर नेक्स्ट 2 hours जस्ट रैंडमली वॉट एवर फैंसी. यू कैन मेक easy money, you can make this that blah blah blah, show off very easy. Reality is different. That is the reason I have mentioned eye opener session. Eye opener session I don't conduct often. Last time, if I'm not wrong, the last eye opener session I have conducted probably 2-3 months back. Right? That is difference between what you are doing and what need to be done. Change अब कर लीजिए. If you are not doing it now, then it is you are again making the core mistake. Mistake में कोई changes नहीं कर रहे हो. बार बार वही mistake करते रहोगे तो आप market आपको reward कैसे मिलेगा? How the market will give you reward? Now आज के example ले लेते हैं ना. Those traders who are in my pro inside trading know this was one reference level I mentioned. यहाँ पे this was the reference level. यहाँ पे क्या था? Sideways downside bearish breakout. Same look, market morning green 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 candle. Chase candle chasing I never do. उसके बाद notice कीजिए यहाँ पे previous location it was bears controlled location. Clean core bears control location. राइट उसी लोकेशन पे प्राइस आराम से ट्रेडिंग अबव इट, क्लियरली प्राइस टेकिंग सपोर्ट एंड रिजेक्शन. सो दिस इज हाई क्वालिटी ट्रेड. यहाँ पे traders who are in the pro inside trading room already are knowing this method strategy before even the market open. उनके पास प्रॉपर प्लान है. दे नो द प्रॉपर लेवल, लॉजिक ऑफ द लेवल, व्हेन टू रिएक्ट, वेयर टू रिएक्ट, सब कुछ सेट है. एंड वंस इट इज इन फ्रंट ऑफ द स्क्रीन द ट्रेडर्स आर आराम से एग्जीक्यूटिंग द थिंग्स independently, core independently. There is no need of any dependency, pure independently. यहाँ पे दिस इज हाई प्रोबेबिलिटी. यहाँ पे क्या दिक्कत है? कुछ नहीं. क्लियर मार्केट के साथ चल रहे हैं. सपोर्ट, प्रीवियस जोन, रेफरेंस लेवल जहाँ पे बियर्स फुल कंट्रोल लेते हैं. यू ऑल्सो नो दिस. सेम यहाँ पे बुल्स ने टेक ओवर किया. टेक ओवर के बाद प्राइस मोमेंटम ऑन द अपसाइड, आराम से प्रॉफिट इज बीन बुक्ड. Time frame I am changing. I was in daily, I came to 30 minutes, now I am at the 5 minute. But rule में कोई changes नहीं. Rule, core rule still remains the same. समझ रहे हो? फिर से वही लॉजिक, क्लू, लोकेशन, रिस्क टू रिवॉर्ड, and the trade should be as per your plan or as per your setup. That's it. These are the 4 core pillars. These are the 4 core pillars जहाँ पे market is trying to evolve, market is trying to tell you. Clue. Okay. Next, location. Next, risk to reward.
whether the opportunity is as per your trade setup. That's it. Risk reward is there. Position sizing, obviously you are already managing it because you are not new, or no, you are not noob, so that I need to sell, you have to manage position sizing. That is first priority. क्लू है, लोकेशन सही है, रिस्क टू रिवॉर्ड सही है, इट इज एज पर द ट्रेड प्लान या फिर ट्रेड सेटअप. जस्ट अ स्मॉल चेंज, इट कैन बी एज पर योर ट्रेड प्लान और ट्रेड सेटअप. दैट्स इट. व्हाट एल्स इज रिक्वायर्ड? इससे ज़्यादा कुछ ज़रूरत ही है नहीं. निफ्टी का आज का एग्जाम्पल, क्लियर, क्लीन मूव, कोई प्रॉब्लम नहीं, आराम से प्रॉफिट्स आर बीन बुक. Wait for that high probability, capture it and relax. Today's clue, Nifty bullish. Location, price is moving up. Where previous bears dominated location, price is trying to take support. Risk to reward, aram se favorable. It was as per the trade plan or strategy. Yes, pre-build plan before the market opened. The plan was ready, right? All the tick is there. One, two, three, four. All tick is there in the pro inside trading room among the traders. Now this is called as high probability option. यहाँ पे whenever you are taking any trade, one more thing, whenever you are taking any trade, there should be zero prediction. Randomly कुछ predict नहीं करना. चार्ट में क्या confirmation है, just try to see it. If there is any confirmation, you have to react accordingly. चार्ट में कोई confirmation नहीं है तो never ever try to touch that opportunity. That is from my experience, I am telling you. बाकी you traders have also experienced, you know what mistakes you are doing. Whatever I am been talking right now, these mistakes you have done it and you are doing it. Don't do it in the future. ये सेशन आई एम डूइंग इट फॉर फ्री, नॉट फॉर जस्ट. व्हाट इज द यूज ऑफ एनीथिंग आई एम डूइंग इट फॉर फ्री? मुझे कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला. आई एम टेलिंग यू वेरी प्रैक्टिकली, राइट? वंस द सेशन कंप्लीट्स, you are doing your own work, I am doing my own work. My goal is, when I was new into the market, there was no one to teach clear path. That is the motive I want. My motive is simple. I want you traders to not face that same issue. Clear, clean motive, fine and fair deal. Now time is 9:30, so now traders, tell me any questions, query if you have, you can let me know, because for the past 1 hour I have not asked any question. Any questions, queries if you have, you can let me know in the chat box. Or if no questions, I can go forward. कोई questions है, you can let me know in the chat box. No question, just type no in the chat box. Very simple. If there is no question, just type no in the chat box. One question from Chetan sir, can't able to hold trade in profit. Before executing any trade, you need to know sir, आपका risk to reward कितना है. That is important Chetan sir. If you don't know कि आप कितना आपके target, from your entry till your target, how much is your risk to reward? It should be minimum above 1:1. Less than that, avoid all the trade. That is the my rule I do. Any opportunity I'm entering, if the risk to reward, my target level is less than 1:1, means that opportunity is completely avoided. That's it. And not even I'll be thinking, not even 1%. एकदम से straight away it's a avoid from my side without even thinking. Now coming back to the daily time frame, आप भी notice कीजिए. One more, let's take, there are both multiple stocks are there. For example, I've used any other scanner. दूसरा कोई scanner use करते हैं. Charts are loaded, 45 stocks in front of me. Right, what are all the next thing I can check? Just a minute. Krishna sir is asking how to use VWAP with 2 dimensions. Sir, what is 2 dimensions, sir? How to find stock as I started 850? Sir, finding stocks, you have to do it pre-market. Right, जहाँ पे what I do is I have these scanners. यहाँ पे pre-built scanners, it comes
After market it get plotted for my next trading session. Different type of scanner, few will have 80 stocks, few have 400 stocks. So now all these stocks one by one if I open यहाँ पे मान के चलिए यहाँ पे this scanners today for tomorrow's session I have 790 stocks. So every 790 stocks, if I open every stock and if I plot by typing name, Bajaj Finance, etc., it will take 4 hours, 790 stock. That is the reason I have created a tool for myself. जहाँ पे I will upload the watch list. I'll just check next, 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 next. The stocks will start coming in just fraction of seconds. Charts automatically gets loaded. This is what I have created for me. Probably I'll try to give access for this to you traders probably in the next week or upcoming week. So now look at Ashok Leyland. Fantastic example. As I was seeing, I have got this one stock, Ashok Leyland. Now notice कीजिए where the stock is trading, all time high. चलो बढ़िया, right? Now notice कीजिए previous sideways to down move location, price made a breakout, now pull back, it is rejecting. Resistance turning into support, clear bullish candle भी form हो रहा है. तो अशोक लेलैंड will be in my radar for tomorrow's session. Ashok Leyland will be in my radar for tomorrow's session, 100%. Chetan sir is asking, eagerly waiting for screeners. Sir, when I am giving access, I will giving access two things. Sir, ये पूरा stock scanners पूरा मिल जाएगा. Plus, you will get this tool also, this navigator tool. 790 stocks. I'll tell you how much time I will take. It will take for me 790 stocks. I have got it in the scanner, right? Once done, I will upload it in my watch list, which I will be getting it here. यहाँ पे मुझे मिल जाएगा. So far I have uploaded only two. यहाँ पे you can just closely track here. Okay, it is asking me to log in. चलो बढ़िया. यहाँ पे I have added only two, which you can see here in the watch list. Okay, now it is not loading watch list. चलो बढ़िया, कोई problem नहीं. I have to re-log in here, but this is the watch list. I have marked it. मैंने plot कर लिया यहाँ पे. So I have just moved it. Once I am giving access, I will give access to the board. अभी के लिए it is in the, already it is tested, but I want to test it more. So 790 stocks for tomorrow's session. Each stock, if I open, it will take 5 hours by typing. With this tool, I will be doing it in just 40 to 45 minutes done. मान के चलिए यहाँ पे अशोक लीलैंड क्विकली सब प्रीवियस रेजिस्टेंस टर्निंग सब ये मेरे लिए इन माय वॉच लिस्ट, ऑल टाइम हाई पे हो रहा है, ये मेरे लिए वॉच लिस्ट. नेक्स्ट एयू बैंक, ऑलरेडी द मोमेंटम हैज हैपेंड, चेस नहीं करने वाला हूँ. एक्सिस बैंक, नाउ इट इज ट्राइंग टू पिक अप, बट यहाँ पे देखिए नोटिस कीजिए अग्रेसिव बियर्स, यहाँ पे अगेन अग्रेसिव रेसिस्टेंस, फास्टली प्राइस रिजेक्शन लोकेशन. प्राइस तो बुलिश है करंट स्टेज में, 52 वीक हाई पे ट्रेड कर रहा है एक्सिस बैंक, बट लोकेशन सही नहीं है, नहीं देखना. नेक्स्ट सेंचुरी प्लाई, ये तो कंप्लीट अवॉइड. नोटिस कीजिए क्या है, फैंसी ग्रीन कैंडल फॉर्मेशन, प्राइस जिगजैग 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 चार्ट दिख रहा है, देखना ही नहीं है. नेक्स्ट चोला फाइनेंस, नोटिस कीजिए चोला फाइनेंस, व्हाट इज हैपनिंग, कंसिस्टेंटली कमिंग डाउन, ये टू ग्रीन कैंडल फॉर्मेशन. वेदर आई विल बी चेसिंग, नहीं करने वाला हूँ, नहीं, बिकॉज यहाँ पे मंथ, फुल मंथ इट इज इन रेंज, उसी रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है. मुझे अंदर ट्रेड करने वाला स्टॉक ज़्यादा पसंद नहीं है. ट्रेडिंग इन बिटवीन, मेनली व्हेन इट इज इन द रेंज, इट इज इन बिटवीन मींस आई नीड अनदर एनी अदर क्लू. या तो कोई सपोर्ट से रेसिस्टेंस ले रहा है, सॉरी सपोर्ट ले रहा है, या फिर रेसिस्टेंस से सपोर्ट इट इज टेकिंग, कोई फेलियर क्लू है, या फिर पुल बैक रिजेक्शन है, देन आई विल बी गोइंग इट. यहाँ पे ऐसा कुछ सिनारियो नहीं बन रहा है. वंस आई सी इट आई फाइंड आउट. नेक्स्ट forcefully I have opened, I am giving this access is available this on a free trading view. आप नोटिस कर रहे हो एड्स आ रहे हो, फ्री टूल है, फ्री ट्रेडिंग व्यू चार्ट में बन रहा है. नाउ नोटिस कीजिए दिस क्राफ्टमैन स्टॉक, यहाँ से पिवोट से तो रिजेक्ट ले रहा है, बट ये फैंसी ग्रीन कैंडल, फैंसी कैंडल नॉट इंटरेस्टेड, नहीं चाहिए. फैंसी कैंडल का मतलब बिग ग्रीन कलर कैंडल, तो उसमें ऑलरेडी मोमेंटम हो चुका है, उसके बाद कंटिन्यू होगा नहीं होगा ये हमको पता नहीं. यहाँ पे नोटिस की सिटी यूनियन बैंक,
प्रीवियस इट वाज रेसिस्टेंस, यहाँ पे सपोर्ट के थ्रू कन्वर्ट हो रहा है, प्राइस ट्राइंग टू मूव अप. आई हैव आल्सो, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई हैव अपडेटेड कि सिटी यूनियन बैंक एंड नाइका, टू स्टॉक्स इज इन माय फोकस. यस्टरडे आई हैव अपडेटेड. आज मोमेंटम दे रहा है प्राइस. प्राइस रैंडमली कुछ भी चीजें नहीं ले रहा हूं मैं, एवरीथिंग एज अ क्लू. लोकेशन, रिस्क टू रिवॉर्ड, एज पर द ट्रेड सेट, ये चार चीजें सब में अलाइंड है. सिटी यूनियन बैंक आप ट्विटर पे देख सकते हो, ट्विटर, व्हाट्सएप, टेलीग्राम. मेक श्योर टू ज्वाइन एवरीवेयर, वेर एवर आई, बिकॉज वेन एवर आई एम गेटिंग टाइम I will post it on any platform up, so that you can stay connected in all platform. जहाँ भी मिल रहा है, turn on your notification, you are ready. Now comments. यहाँ पे नोटिस कीजिए प्राइस साइडवेज है, पूरा साइडवेज ही हो रहा है. अब ये वेदर इट विल कंटिन्यू अप और डाउन, इतना क्लैरिटी नहीं. थोड़ा सा हाफ बेक्ड क्लैरिटी, उसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना. मूविंग फॉरवर्ड. फेडरल बैंक, ऑलरेडी फेडरल बैंक जस्ट एस्टरडे ओनली प्रॉफिट बुक किया है, तो ऑलरेडी मोमेंटम डन. जीएमआर एयरपोर्ट, जीएमआर एयरपोर्ट आप नोटिस कीजिए, बहुत स्लो मोमेंटम स्टॉक है, कितना टाइम पास करता है. ऐसे स्टॉक से भी मैं दूर रहता हूँ. स्कैनर दिखाता है, पर जैसे ही स्टॉक में देख रहा हूँ, अब मान के चलिए मैंने सारे इंडिकेटर्स ऑफ कर दिए, फर्स्ट चीज में मेरे चार्ट ऐसे ही जूम आउट रहता है, लाइक दिस ओनली. नाउ हाउ मेनी टाइम्स जीएमआर एयरपोर्ट हैज मेड अ गुड बुलिश मोमेंटम? बहुत रेयर. कितना ज्यादा ओवरलैप करता है स्टॉक, हाउ मच टाइम इट इज ओवरलैपिंग. तो स्कैनर दिखा भी रहा है तो मैं इससे दूर हूं, नहीं करना है. नेक्स्ट, यहाँ पे नोटिस कीजिए जीपीपीएल, चलो बढ़िया, प्राइस यहाँ पे टाइट रेंज पे ट्रेड कर रहा है, सब कुछ सही है. द प्रीवियस रेसिस्टेंस ट्राइंग टू, प्राइस उसके ऊपर स्टेबलाइज्ड हो रहा है, राइट. इवन इफ इट इज मेकिंग अ ब्रेकआउट, यहाँ पे देखिए डाउन मूव, पुल बैक, अग्रेसिव रिजेक्शन, इमीडिएट रेसिस्टेंस. ब्रेकआउट करेगा तो भी रिस्क टू रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है. मैंने बोला ना, फोर थिंग्स आर इंपॉर्टेंट, फोर पिलर्स. क्लू, लोकेशन, रिस्क टू रिवॉर्ड, ट्रेड सेटअप एंड प्लान. ब्रेकआउट है, लोकेशन भी ठीक ठाक है, क्लू बुल्स के साइड पे, ब्रेकआउट पे, रिस्क टू रिवॉर्ड फेवरेबल है, यस और नो? कैन एनीवन टेल मी यस और नो इन दिस? रिस्क टू रिवॉर्ड इज फेवरेबल? नो, नॉट फेवरेबल, नहीं करना. राइट, रिस्क टू रिवॉर्ड नॉट फेवरेबल, व्हाई? नॉट वर्थ. रिस्क टू रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है बिकॉज यहाँ पे इमीडिएटली रेसिस्टेंस है. ब्रेकआउट पे एग्जीक्यूट करेंगे, हार्डली 1:1 मिलेगा, कोई काम का नहीं. 1:1 बुकिंग प्रॉफिट, लॉन्ग टर्म लॉन्ग रन में रिवॉर्ड इज नॉट पॉसिबल. एचडीएफसी बैंक देख लीजिए, जैसे ही स्टॉक देखूंगा ना, दिस काइंड ऑफ प्राइस बिहेवियर, अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन मोमेंटम, वंस इमीडिएट फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड जहां पे मैं स्टॉक्स, ऐसे स्टॉक देखूंगा, कोई नथिंग, आई विल बी चेकिंग स्ट्रेट अवे, स्किप. Like this HDFC, like zigzag zigzag skip, that's it. Screener में दिखा रहे, Hero Motors slowly moving up, this is fine and fair. IAFL फिर से momentum कर रहा है, चलो बढ़िया. This is one more thing to be tracked, worth to track, because price फिर से previous resistance को cross करने की कोशिश कर रहा है. Now JK Bank, look at this, ये कितना clustered है सर, how much cluster, कोई काम का नहीं. जैसे ही आंसर सी इट नेक्स्ट. सो दीज आर सेविंग लॉट ऑफ माई टाइम. यहाँ पे जो दी सीएनसी ऑलरेडी डाउन मूव में, कुछ ज़्यादा स्पेशल प्राइस एक्शन नहीं बन रहा है. वेयर आई विल बी फोकसिंग, यहाँ पे प्राइस ऊपर जा रहा है, सीधा गया तो आई एम नॉट डूइंग एनी इंटरेस्ट, आई एम नॉट इंटरेस्टेड. प्राइस यहाँ से प्रीवियस रेसिस्टेंस, यहाँ से सपोर्ट ले रहा है, बिकॉज यहाँ से ब्रेकआउट फेलियर भी हुआ, सो बियर्स कंट्रोल्ड है, तो प्राइस इसके ऊपर प्राइस स्टेबल कर रहा है, टेकिंग सपोर्ट, देन ये हो गया मेरे लिए हाई प्रोबेबिलिटी अपॉर्चुनिटी. Right, these are the things which you have to start practicing. There is difference between high probability opportunity, randomly doing anything. Randomly market आपको reward नहीं देने वाला है, आपको क्लियर क्लैरिटी के साथ एग्जीक्यूशन करना पड़ेगा. There is no other option available. Fine and fair.